बड़ी मुश्किलों से हमने एक मेंटोर को पकड़ा है. वी नाउ हैव हसन महमूद फ्रॉम करीम और हम इनसे सवाल करेंगे व्हाट हैज हिज एक्सपीरियंस बीन इन दिस इवेंट. It's been great so far. मतलब it's very exciting to see so much talent with so much energy, enthusiasm. और ऊपर से one particular thing that's very impressive is कि a lot of female talent and female-only startups that are coming up. So it's very encouraging to see all these people taking a stand and working for the betterment of society. एक और अच्छा aspect ये था कि most of the startups were focused on social angles. तो that was very encouraging to see. So that's very nice. तो अब आप हमें जल्दी से बताइए on the top of your head what were the top 3 startups जो आपको लगता है कि 3 टॉप होने चाहिए. एक आई वुड से कि ये रेंडरिंग लाउंज था, द वंस हु आर डूइंग समथिंग इन VR, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर दैट स्टार्टअप. फिर देयर वाज दिस गर्ली थिंग्स जो कि काफ़ी एक इम्प्रेसिव स्टार्टअप है. आई थिंक दैट शुड बी बैक्ड बाय ऑल द ब्रांड्स इधर. और another one I think there's a couple of aggregators जिसमें मैं अभी divided हूँ टिकटिंग के और ऑनलाइन ट्रैवल के. तो I'm not really sure, like I think probably one of the aggregators जो टिकटिंग पे काम कर रहे हैं. ठीक हो गया. तो आप सर हमें ये बताइए कि इन लॉट ऑफ द स्टार्टअप्स दे हैव दिस इशू ऑफ फाइंडिंग मोटिवेशन. आपको क्या लगता है कि मोटिवेशन उनको किस चीज़ से ड्राइव करनी चाहिए? बेसिकली सोसाइटी से, मतलब आपका अगर सोसाइटी को सही तरह ऑब्जर्व करें, देयर इज अ लॉट ऑफ गैप दैट नीड्स टू बी फिल्ड और इट्स अप टू इंडिविजुअल्स विद एनर्जी टू फिल दैट गैप. All you need is to get together, get good minds together, brainstorm and solve a problem. बाकी सारी चीज़ें business analysts, finance, all of those fall into place. Just need to take the stand, take the initiative और फिर मतलब put in the effort. नाइस. अच्छा सर हमें ये बताइएगा कि आज का जो स्टार्टअप्स का टर्नओवर है आपको ये देख के क्या लग रहा है? आप वर यू एक्सपेक्टिंग दिस? वर यू एक्सपेक्टिंग लेसर स्टार्टअप्स टू शो और मोर स्टार्टअप्स टू शो? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स दैट हैव शोन अप टुडे? The turnover has been very impressive. अभी तक I was expecting a lot less than the ones that have showed up today. और ऊपर से the more important thing is कि a lot of the startups are mature. They're past that phase beyond the big idea and they have a product that's ready to be rolled out. Some need help in marketing. सब need help in financing, तो it's a great initiative. थैंक यू सो मच सर. अब आप हमें बताइएगा कि एक कोई गाने का लिरिक जो आपको लगता है मोटिवेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. आई वुड से जुनून का कहते हैं, है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार. ठीक हो गया. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम. हम मेंटोर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं बट वी हैवंट हैड एनीवन कम हियर. तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम. Pleasure. The pleasure is all mine. Thank you. सर.